हाय ऑल। कुछ देर पहले ही मेरा एक वॉक थ्रू चल रहा था। मेरा स्टूडेंट है और ऑल्सो ही इज अ यूजर ऑफ आवर प्लेटफॉर्म कि कैसे फिल्टर करेंगे। और फिल्टर मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, किसी भी इंसान को पहुंचाना कि जो भी हो जाए, कि देखो आपका ये नहीं है कि एक ब्रेकआउट लेना, कि मुझे एक मैंने ब्रेकआउट ले लिया, वो ट्रेडिंग कर लिया। ट्रेडिंग तो आप इजीली कर लोगे। Even my kids also can do trading if they come and see. They are 8, 9 years old. If I say them, okay, these are the thing to be looked at. Trading is not a big thing. We are putting our hard-earned money. Whenever you are putting your hard-earned money, you have to take care of that money. So इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सेक्टर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन नॉट टू ओवर एक्सपोज इन अ मार्केट। तो इसीलिए मार्केट ब्रीथ, जो मेरा वीडियो या ट्यूटोरियल वीडियोस जो भी है, मैंने जितने भी सारे अपलोड किया है, अगर आप सोचोगे ना, इतना बोलने का जरूरत ही नहीं था कि एक सेक्टर सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, सेक्टर स्टॉक सिलेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, इंडस्ट्री रोटेशन, ये सारे चीज एक मार्केट पार्टिसिपेंट जब कोई बिजनेस करता है। हाँ, आप अगर मार्केट में बिजनेस के तरीके से देखते हो, आपको बहुत ही शातिर होना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लेवर। इफ यू आर नॉट अहेड ऑफ अदर्स, तो आपको कहीं ना कहीं पे आप एवरेज मीडियो मेट को रह जाओगे। आपको क्या फायदा वैसे रहने का। सो यू हैव टू बी हैविंग सम एज। और एज मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले कैसे पकड़ लिया, आपने कितना कन्विक्शन से पकड़ा और क्यों लिया उस चीज को। नाउ इफ यू कम ऑन कि फिल्टरिंग स्टॉक, कि मुझे क्या देखना है, सिर्फ मुझे एक फिल्टर बता दीजिए कि मुझे यही देखना है। तो मैं, आप अगर एक रेंज सिलेक्ट कर लेते हो कि मुझे ना 1,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का कंपनी देखना है, मुझे बहुत बड़ा कंपनी नहीं देखना है, और मुझे 50% मूव वाला कंपनी नहीं चाहिए। मुझे 50% से जो 60 दिन में मूव कम हुआ है, 22 दिन में जो 30% से नीचे मूव हुआ है, ये सारे कंपनी चाहिए। और जो 5 दिन में 10-15% से ज्यादा मूव नहीं हुआ, ये सारे कंपनी चाहिए मुझे। तो ये इसमें जब आप आते हो तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 943 स्टॉक्स आप मिल रहा है, कि इतने सारे कंपनी में तो आपका लास्ट 5 दिन में ये सारे ट्रेड हो रहा है। इसको अभी और रिफाइन करेंगे कि इफ यू जस्ट पुट कि मुझे एटलीस्ट वो 10 गुना डिलीवरी चाहिए। वही स्टॉक चाहिए जिसमें 10 गुना डिलीवरी हुआ है, ट्रेड हुआ है। मुझे मिनिमम 5 करोड़ का कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है 5 दिन में, एवरेज, वो मुझे चाहिए। तो आपके सामने 13 स्टॉक आ गया। नो 13 स्टॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू, कि इसमें ना आप 52 वीक हाई से कितना डिस्टेंस में है, वो सारे आपने देख लिया। आपने डिसाइड किया कि चलो कि मैं अभी एक स्कोर के हिसाब से शॉर्ट करता हूँ, वो भी कर सकते हो। यू विल सी कि आर के फोर्स को सबसे ज्यादा स्कोर मिला है, अमाउंट भी ज्यादा गया है। तो अगर हम लोगों को फर्दर जाके ये स्टॉक को पिक करना है कि नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा मूव नहीं किया है, आर के फोर्ज, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें अगर सिंबल को डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से आप सारे स्टॉक अपलोड भी कर सकते हो। जस्ट कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, एक न्यू लिस्ट बना लो, आपके पास सारे स्टॉक आ गए। नाउ द थिंग इज, यू कैन लुक के चार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, एक चार्ट एक जगह पे जा रहा है। आर के फॉर्ज में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रहा था, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी इट्स ऑल्सो डूइंग गुड। मध्य भारत एग्रो, जेंसर टेक, तो ये सारे स्टॉक जब आप देखते हो ना कि जेंसर में भी कुछ हो रहा है अच्छा खासा, वो बहुत दिनों से आ रहा था हम लोग के रैडर में। तो इफ आई टेक एनी ऑफ इट, के जन फिनेंस बैंक, सारे स्टॉक को अपने आपके हिसाब से चार्ट देख लिया कि नहीं, यहाँ पे ना मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पर्टिकुलर स्टील स्टीफ वेल्स ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाई स्टेबल वॉल्यूम हुआ है, फाइन। देन डीबी कॉप, इसमें बहुत सारा रिजेक्शन है, आई मे नॉट लुक एट दिस। तो आपका मतलब दिस इज योर पर्सनल चॉइस दैट व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट।
which one you want to select. So you may reduce the number of selection. और अगर हम लोग बोलेंगे कि चलो कि ये सब तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी इतने सारे स्टॉक मुझे पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट वांट टू डू दैट, एंड इफ आई कंसीडर ओनली आर के फॉर्ज और दिस टू, मुझे ना अगर वीकली में मैं जाता हूँ, सो इट इज ऑल्सो क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई, एंड इट इज एट अ समवेयर इट एन अ नैरो लेवल। अभी ये देख के क्या मैं एक स्टॉक में बेट करना स्टार्ट कर दूं? डेफिनेटली नॉट। वही मैं उनको समझा रहा था कि जब भी आप किसी भी एक सेक्टर में अगर हम लोग जाते हैं तो आर के फॉर्ज में जैसे ही जाएंगे, देन फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू लुक एट नो, कि कंपनी अभी क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। यू विल सी के लास्ट 2024 तक कंपनी ने अप ट्रेंड में था, प्रॉफिट अप ट्रेंड में था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था कंपनी का। 2025 से वो घटना स्टार्ट हुआ है। नाउ इफ आई गो एंड टेक सम फर्दर के कब से वो घटना स्टार्ट हुआ है, मतलब रिड्यूस हुआ है जो ट्रेंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। So you'll see that operating profit margin was somewhere around 19%. It came down 17, then 15%. So from this, I can say that the dent has started from a June 2024. Now, if you come on June 2024 and if you see the chart, जो लोग बोलते हैं कि नहीं फंडामेंटल, आपको फंडामेंटल देखना सही से पड़ेगा। इफ यू आर नॉट लुकिंग एट fundamental properly, you cannot hold an asset, because you are holding an asset. You may hold forever, that is a different thing, but if you panic कि क्यों गिर रहा है, वो पैनिक अगर जब कोई कर रहा है, एंड एवरी एसेट इज नॉट फॉर होल्डिंग फॉर एवर, दिस इज अ B2G सेक्टर, B2B सेक्टर, सो यू कैनॉट होल्ड जब पैसा, मतलब when the company is not earning that margin, and reduction in margin, a squeeze in margin definitely states that company is facing competition. So when those kind of things will reflect on financial, you'll have to be cautious. And you will see from a September, October, it was flat and it came down and it is in a downtrend. And just see the reflection that how company has performed. Over a period of time, company has gone till 2025. It is in a downtrend. First time it has touched the profit of similar to 2024, and now it is crossing 208 here. So now slowly it is holding it their profit, getting the better margin, and it is also reflecting on a chart. Now this is one point. Now if I come further कि मुझे और भी सारे चीज देखना है कि नहीं इसमें तो ठीक है, तो कंपनी अच्छा कर रहा है, सब कुछ सही है, खराब जो होना था वो हो गया है। Now I need to go and check that whether company is making what announcement, what JV deals. If you look at and read, no, you will see that international expansion and partnership are key strategies with the company making inroads into the US and Japanese markets. The company received the first order in the US and also become the first Indian drone company to train NATO forces at the US National Test Pilot School. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर। आपको कभी ऐसा हो कि आप एक कोई भी एक जॉब कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको तुरंत तुरंत एक हल्दीराम से ऑर्डर मिल रहा है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा होगा तो दिस इज समथिंग नो बिग न्यूज फॉर यू, बिग अचीवमेंट फॉर यू। लोग सोचते हैं कि कोई बिजनेस, लाइक वेन एवर यू सी अ बिजनेस, यू स्टार्ट विद सेल्स, start with the journey of the promoter. Go and open annual report, go and see their journey, who are the promoters, everything, company information, corporate information you'll be getting on a first page of annual report. In that, you'll be seeing that who are the bankers, who are the board of directors, everything, who are the auditors, all these things you'll have to go and see the management discussion analysis, chairman message, notes to the account, ये सारे चीज आप देखो।
उसके बाद इफ यू थिंक कि नो, दिस इज अ कंपनी, नो, that I can take my decision, then only you take your decision. Otherwise, never ever take your decision based on कि नहीं मैं एक ब्रेकआउट ले लेता हूँ. These are the things to be looked at. And if you look at this company, no, that whether the fundamental is also saying the same thing. Fundamental में आप अगर आओगे, so you'll see that there is a dent in operating profit from 2024. If there is a dent in profit, margin में dent है, then definitely now we are seeing it is settle हो रहा है. ये तीन जो पैरामीटर है इसको अच्छे से देखना है कि सेल्स तो फ्लैट है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है. डेफिनेटली आप the smart market participant will not give any valuation, they will exit. You need to pick. So I will show you that how one has to look at these things. Now if you look at companies, फर्स्ट पैरामीटर्स में ही फेल हो गया है कि कंपनी जब मतलब इफ आई टॉक अबाउट 2024 इट हैज गॉन डाउन. नाउ इफ आई कम ऑन द वैल्यूएशन पार्ट, वन सेकेंड, इसमें आपको if you want to see raw number you can see the raw number. If you want to see these things on a um, like a graphical chart you can see that, choose also that. Now look at company is doing a EV EBITDA of 19, price to cash EPS it is 25. Fine, price to P ratio is very, but the realization is very good. Now, if I come on this particular thing, here is a graph that what is the journey of the company. Company should do the journey, no? EPS should always rise, and EPS if it comes down and P goes up, that means company is not making enough profit. So we need to always look at whether company is able to generate will able to generate their profit what they are doing in 2022-23. Now it is only hundreds here. So that is why it looks very odd. But when you look at their announcement and recent performance, you will see that company is will be doing reasonably good, and last two quarter they are performing well because of the last to last like in previous on a Q1 and Q2 of 2025 they have not performed well, but Q3 Q4 we have seen that they have performed pretty well in terms of their margin. And also some announcement and the filings if you read, it looks that the company is going to do reasonably well. Now if you come on a snapshot of this, you will see the company is growing their sales, asset is also at per, and these things may not look initially that okay fine what it is and all, but when you will I'll show you some more companies where you can actually see no that how deteriorating assets, how a company mismanaged can be looked at. So here everything is good, there is a very like date is not increasing the way sales is increasing, so it is pretty good. This kind of a thing, no, as an investor I looked at that profit is growing but company is not just growing their debt abruptly, it is flat. Fine, there is a dent, that is why it is coming down, but company's debt is not rising, that is a good sign. So all this thing all together if you look at, now if I select no, it makes sense. No, this is the company that where I looked at. No, these are the things are happening in US, Japan, they are doing. And if you go through con call, no, you will see lot more. So I'm not wasting my time on reading all these things for you that you can read and find out. And if I show something more interesting, suppose EMS Limited, as I said that why, how market gives all clue to you. If you come on EMS, you will see that there is a dent in profit. It was in uptrend. The way you look at chart uptrend, always try to be see the financial uptrend. फाइनेंशियल अपट्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपका नस चेक करता है, नर्व, ऑल दिस थिंग.
वो सीधा आपको नहीं भेज देता है कि जाओ जाके आप एक टेस्ट करके लेके आ जाओ। जब कुछ गड़बड़ दिखता है तब जाके आपको देखना है, और या कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तब जाके आपको डेफिनेटली कैश फ्लो बैलेंस शीट तो देखना ही देखना है। बस फर्स्ट आप अगर देखोगे कि यहाँ से ना गड़बड़ कुछ स्टार्ट हुआ इस जगह से, तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो इसका एक रिफ्लेक्शन भी होगा कहीं ना कहीं पे। कंपनी अच्छा खासा 60-70 करोड़ का कर रहा था, यहाँ से 64 करोड़, 54 करोड़, धीरे धीरे वो नीचे जाता गया। जबकि 70 करोड़, 50 करोड़ हो सकता है किसी जून में एक सिक्लिकलिटी के लिए हो रहा है, बट यहाँ पे जाके मार्च टू मार्च में अगर हम लोग देखेंगे वो फ्लैट में आ गया। धीरे धीरे वो नीचे आपका कंटिन्यूअसली इट हैज गॉन डाउन। Even we have seen on a March 2025, company has like ओ, जो स्क्वीज हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 28 से 24% हो गया। तो ये सारे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे कैश फ्लो देखना चाहिए। अगर कैश फ्लो देखने के जगह पे मैं इसमें चला जाता हूँ कि एडवांस इनसाइड में। एडवांस इनसाइड में आपको सारे दिख जाएंगे कि कंपनीज ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाज इन नेगेटिव। पैट जब पॉजिटिव था तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये जीरो लाइन से नीचे आ गया था। ये एटलीस्ट तो 70% रियलाइजेशन ईपीसी कंपनी है, ठीक है चलो एक साल में कभी ऊपर ही नहीं जा रहा है, दिस इज अ गैप। तो इतना बड़ा अगर गैप रहेगा किसी कंपनी में प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, तो वो कंपनी को वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। तो इस जगह से वाइडनिंग्स होना स्टार्ट हुआ। आप अगर यही चीज चार्ट में हम लोग देखेंगे 2024 दिसंबर, वो नीचे जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आप जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस खराब होता गया वो आपका नीचे जाता स्टार्ट हुआ, जाना स्टार्ट हुआ, एंड इट वाज क्लियरली विजिबल ऑन fundamental that when to exit. Whenever you see, there is a huge difference, and company is also not growing in their operating profit margin, or in EPS terms, you need to take an exit in an EPC company. This is not a precision engineering or aerospace defense related company. This is a pure EPC contractor. So in such cases, also I would like to show you some more details where company is growing their debt, सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है, डेट ग्रो हो रहा है। यू विल सी दैट कंपनी इज अनेबल टू क्लियर देयर इन्वेंट्री, सेल्स इज गोइंग डाउन, इन्वेंट्री इज राइजिंग। whether company can get the good valuation, no. As of now, again cycle is back, company can perform good, they have may have done a filing, but how to look at thing, they're getting a lot of order, because this is a seasonal and cyclical business. Whenever government will come with a tender, company will do good. How they are allocating their assets, that decide how good you are allocating your capital, that decide your journey. If you are not a good allocator of an asset, you are unable to realize your sales is not growing but asset is continuously growing, your sales and profit both are in dips. Fine, fixed assets are like sales is also going deep, fixed assets are fine, it's not growing, but your debt is continuously growing. That means somewhere there is a problem. Your inventory is continuously growing, your receivable days are growing. These are not, you are unable to realize. So these are not good sign, and how a company can get a good valuation with this kind of a financial, and that was a reflection from a 2024. Now again, if this is a cycle will come, this company will perform, holding businesses in a EPC business and saying, oh no, I'm holding. Even if you look at just engineering kind of a business, similar sector, but not a EPC company, but they are in a also, but they also faced a headwind. They also faced a headwind. Now, if you look at, there is a dent in operating profit, then dent in margin, everything is not good. But what they have done, they are not a by nature they are not in a EPC contractor business, they are in equipment. Fine, they have not gone below zero somewhere, they are matching their operating profit and cash flow very close. They have not grown their asset abruptly, it is in fine trend.
Now, if you look at the sales is growing, debt has not grown that much. It is flat, profit is growing, but debt has not grown. So how much they are growing their debt? We made a base and we have shown you that okay, fine, profit is growing and debt has not grown. That means company is allocating their fund properly. Sales and inventory is at par. It is not abrupt, sudden spike or something. Fine. It is under a trend. So from that, no, you can understand a company. But definitely, market will not reward if company is not in a uh, doing a profit. So that is why the fall is less. They came down and gone up also. But if you see the journey, this is a much better company, good allocator in a different segment, though from a same sector, but in a equipment segment. So if you go and read further, this kind of a business, how to differentiate, how to use our platform. So everything we have given, if you look at properly, if you understand that what should drive. So if you look at a financial, you'll be able to spot, okay, now these are the thing to be looked at. Company has suddenly started like suddenly we have seen 24 crore, 40 crore, 58 crore. Then July 2000, it is slowly going down. And slowly when it's going down from 2020, May 2025, almost same period, it's going down. So chart is just a replica of the financials or something which you don't know. But if you say number will come later on, no, not only numbers, in between the numbers, in between this advance inside, everything is there. You can spot those things. Like in EMS, we are able to spot that the cash flow and profit and loss, operating cash flow, there is a huge gap. There is a huge gap in 2024. How it can get a good valuation? Those are the thing, no? Though it is a EPC company, but still it is not at par. 183 crore of profit, whereas 33 crore of operating cash flow. I hope that this video will help you to understand and analyze business more properly. Thank you, everyone.